Hello dear kids, I welcome you all to my English class. As you all know, I hope by now you know my name. आपको मेरा नाम याद होगा. I am Ranjana ma'am and I hope that you all are doing good. You all are fit and fine and hale and hearty in your homes. Children, stay healthy, stay happy and most importantly, stay safe. Abhi time, it's a very difficult time at the moment. We are having lot of restrictions. We are facing lot of restrictions. बहुत समय अच्छा नहीं भी लगता है. But अभी इसके अलावा we do not have any other option also. अभी ये सारे प्रिकॉशंस लेने के अलावा, ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. बट वी ऑल आर श्योर दैट दिस टाइम विल ऑल्सो पास. सबको मालूम है ना, टाइम तो अपने हिसाब से चलता ही रहता है. टाइम नेवर स्टॉप्स. सो दिस टाइम विल ऑल्सो पास. वी विल अगेन come to school, we will again meet each other, we will see each other. ठीक है ना? We will talk to each other. सारे जैसे स्कूल में हम पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे. This is not your permanent classes. This is just a temporary arrangement. Since you are not able to come to school, we are having these online classes. And these online classes, I'm sure, are quite interesting. ये भी एक पढ़ने का एक different style है. Okay, so I hope and I definitely believe that you all are enjoying these classes because you don't have to get up early in the morning. सुबह सुबह उठना नहीं पड़ता है. सुबह उठ के तैयार होकर के स्कूल नहीं आना है. You just have to get up, breakfast खाया and class में attend कर लिया. घर के ड्रेसेस में भी बैठ सकते हो. So I'm sure you all are enjoying these classes. So let us come back to the class now. Children, till now, we were doing English course book. In English, you have two books. One is your main course book and the other book is your grammar book. Okay? So, till now, we were doing English course book. That is your main course book, which was Wordsworth English Reader. We have done one poem and two lessons in main course book. Today, I will start the grammar book. Okay? In grammar, all the exercises will be done in the book only. Grammar के लिए आपको separate notebook बनाने की कोई जरूरत नहीं है. All the exercises will be done in the book only. Okay? So your grammar book is Superb English Grammar Book 1. Okay? And I hope that you all have got this book also. Along with your English book, you have your grammar books also. Okay? So your grammar book is Superb English Grammar. Grammar, children, as I told you, it is very important part of any language. कोई भी language है, language मतलब भाषा, जो हम बोलते हैं. Whether we speak English or Hindi or we speak our mother tongue, नेपाली है, मराठी है, पंजाबी है, बंगाली है, तमिल है, whatever is our mother tongue. हर एक लैंग्वेज में ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रामर जिसको हिंदी में व्याकरण बोलते हैं. ठीक है? ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ग्रामर ठीक से नहीं आता है, इफ यू डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ ग्रामर, देन you will not be able to use that language properly. उस लैंग्वेज को आप अच्छे से बोल नहीं पाओगे, आप उस लैंग्वेज को अच्छे से लिख नहीं पाओगे, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा? यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आपको किसी से कुछ बोलना है, किसी से कुछ कहना है, अगर ठीक से बोलना नहीं आएगा, ठीक से लिखना नहीं आएगा, तो हाउ विल यू डू इट? आप नहीं कर पाओगे ना. आपकी कोई जरूरत है, यू आर थर्स्टी, यू आर फीलिंग हंग्री, खाना चाहिए, तो अगर बोलना नहीं आएगा कि मम्मी मुझे खाना दो, तो आप कैसे बोलोगे? ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रामर के बहुत सारे रूल्स होते हैं, सो दैट वी
can use the language in a proper manner and in correct manner. से जो व्याकरण होता है, ग्रामर होता है, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको कि फॉलो करने के बाद ही जिसको कि हमें फॉलो करना होता है सो दैट हम उस लैंग्वेज को करेक्ट वे में सही तरीके से यूज कर सकें. ओके, सो टुडे I will start English grammar, and the first chapter in your grammar book is alphabetical order. This is your page number 5. Chapter number 1 is alphabetical order. Okay, this is our chapter number 1, alphabetical order. Now, what are alphabets? Alphabets सबको मालूम है. In English alphabet there are 26 letters, and alphabet is the group of all the letters, consonants plus vowels. सारे मिलाकर के क्या होता है? They form alphabets. So alphabet is the group of all the English letters. Okay? So we have already learnt about alphabets through the poem Alphabetical Song. Alphabet Song poem thi the first poem in our main course book, which was Alphabet Song. So we have learnt about all the alphabets through that poem, and I'm sure आपको पहले से भी सारे अल्फाबेट्स आते थे. सो अल्फाबेट इज द ग्रुप ऑफ ऑल द 26 इंग्लिश लेटर्स. ठीक है, अल्फाबेट सॉन्ग में भी हमने पढ़ा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर. दिस इज द लेसन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. नाउ व्हाट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर? अल्फाबेट्स हमें मालूम है. अल्फाबेट्स आर A, B, C, D, E, F, 21 consonants plus 5 vowels. They all together form alphabets. Now the question is, what is alphabetical order? Alphabetical order किसको बोलते हैं? In maths also we did increasing order, decreasing order. How do we write numbers in proper order? Okay, so writing anything order means writing it in a proper sequence. Like in maths, write the numbers in increasing order. What does it mean? That means you have to write the numbers which are given from smaller to greater. Write the given numbers in decreasing order. What does it mean? That means जो भी numbers दिए हैं उसको आपको greater to smaller लिखना है. ठीक है? So similarly, arranging anything in order means arranging the things in proper sequence. So alphabetical order is also the sequence in which all the 26 letters of English alphabet are arranged. ठीक है? And what is the order of writing English alphabets? It is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, then Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. This is the order in which all the alphabets are written. So this is known as alphabetical order. Okay? आप इस ऑर्डर को, इस सीक्वेंस को यू कैन नॉट चेंज ऑन योर ओन. आप इसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि मुझे अल्फाबेट जी बहुत पसंद है बिकॉज माई नेम स्टार्ट्स विद जी, और सिंस माई नेम स्टार्ट्स विद आर सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ अल्फाबेट आर, तो मैंने आर सबसे पहले लिख दिया. नो, यू कैन नॉट मेक एनी चेंज इन दिस ऑर्डर. ठीक है? सो दिस इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर.
That means the sequence in which all the letters of English alphabet are arranged. मतलब जिस सीक्वेंस में इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स अरेंज होते हैं उसे कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके, सो इन दिस chapter, in this unit, we will revise the alphabets, that is A, B, C, D, E, F, G, H, A to Z, and then we will learn alphabetical order. ठीक है? तो as I told you, all the 26 letters form English alphabet. Alphabet is the group of all these 26 letters. In these 26 letters, 5 are vowels, 21 are consonant. This we have already learnt through the poem Alphabet Song, and I am sure you have done this in pre-primary also. Now, this is alphabetical order starting from A to Z, and letters are arranged in this order and they will always remain in this order only. अल्फाबेट्स को हम हमेशा इसी ऑर्डर में ही लिखेंगे. वी कैन नॉट मेक एनी चेंज ऑन आवर ओन. ठीक है? सो नाउ लुक इन टू योर बुक, पेज नंबर 5. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स. ओके, so you can see in the book there are 26 letters in English alphabet. It is written here. They are set in a special order: A, B, C, D, E, F, G, H, and so on till Z. This is called alphabetical order. As I shown you बोर्ड पे जैसे मैंने लिखा कि A to Z तक जिस सीक्वेंस में हम अल्फाबेट्स को लिखते हैं, दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम. फर्स्ट पिक्चर you all can recognize. The first picture is of an egg. So what is the first alphabet for first letter of egg? This is E. ठीक है? You have to write the first letter of their names. ये जो भी चीजें हैं, जो भी पिक्चर्स है, इनके नेम का यू जस्ट हैव टू राइट द फर्स्ट लेटर. ओके, देन नेक्स्ट इज you all can identify this animal. This is zebra. So zebra starts with, the spelling of zebra is, first was egg, so first letter is E. Then Z-E-B-R-A, zebra. So the first letter is Z. We will write Z here. Then third, as you all know, you can identify, this is aeroplane. A-E-R-O-P-L-A-N-E, aeroplane, and the first alphabet is A. So we write here A. Aeroplane के नीचे हमने A alphabet लिखा. And fourth picture is tree. T-R-E-E. First alphabet is tree. So I write T here. So now I get 4 alphabets: E, Z, A, and T. Okay. Now write these letters in alphabetical order. अभी ये जो 4 letters हमें मिले, E, Z, A, T. We have to write these 4 letters in alphabetical order. मतलब ये जो 4 letters है, इन्हें हमें alphabetical order में लिखना है. It is like maths. जैसे maths में increasing order है, decreasing order है. In English, since in English there are no numbers, only letters are there. So in English we have alphabetical order. Now out of these 4 alphabets, which alphabet will come first? E, Z, A, T. इन 4 letters को हमें alphabetical order में लिखना है. So first we will see which letter will come first in English alphabet. So first letter is A. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? We will write A. Then next letter would be A, B, C, D, E. Next would be E.
So we will write E. Then after E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. So next would be T. Then U, V, W, X, Y and Z. So when we arrange the letters E, Z, A, T in alphabetical order, the alphabetical order is A, E, T, Z. मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब हुआ कि जो लेटर सबसे पहले आएगा उसे हमें सबसे पहले लिखना है, फिर नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट एंड सो ऑन. ओके, सो दिस इज हाउ वी राइट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अभी तो ये हमने अल्फाबेट्स को लिखा. नाउ लेट अस सी हाउ डू वी अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. Let us see how do we arrange the words. Words को हम alphabetical order में कैसे arrange करते हैं? The first question is, here are some fresh fruits for you. You can see some fruits in the basket. Write their names in alphabetical order. Okay? You can see the fruits in the basket. Now you have to write their names in alphabetical order. So let us first write the name of all the fruits. Whatever fruits can we see in the basket, let us write their names first. Okay. So what all can we see? We can see mango. We can see cherry. Then we can see apple. Then we can see banana. Then we can see a big papaya. Two fruits are hidden at the back, but I do not know which fruits are these. One looks like mango and maybe this is also an apple. So mainly there are 5 fruits in the basket. Mango, cherry, apple, banana and papaya. Now we have to arrange these fruits in alphabetical order. अभी हमें इन fruits को alphabetical order में लिखना है. So how do you do this? कैसे आप इसको लिखोगे? ये तो पूरे वर्ड्स है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा, नेक्स्ट कौन सा आएगा एंड नेक्स्ट कौन सा आएगा? कैसे पता चलेगा? So what do we do? हम क्या करते हैं? When we have to arrange the words in alphabetical order. जब हमें words को alphabetical order में arrange करना होता है तो हम हर एक word का first letter देखते हैं. We see the first letter of each word. ठीक है? Like the first letter of the word mango is M. The first letter of the word cherry is C. The first letter of the word apple is A. Then the first letter of banana is B and the first letter of papaya is P. Okay? So, what are the first letters? The first letters are M, then C, then A, then B and then P. Okay? So, these are the 5 letters. M, C, A, B, P. Okay? Now, you arrange these letters in alphabetical order. So which letter will come first? Obviously A. A will come first. So write here A. Then after A, which letter will come? B. So we write here B. Then after B, which letter will come? C. So we write C. Then A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Then comes M. So we write M here. And last is P. Okay. So we have written the first letters of each word. Now you complete the word. A से कौन सा word है? Apple. Then B से
B-A-N-A-N-A, banana. Then C, C-H-E-R-R-Y, cherry. Then M, M-A-N-G-O, mango. And P, papaya. P-A-P-A-Y-A, papaya. So that is how we arrange the words in alphabetical order. Okay? When the words are given, when we have to arrange the words in alphabetical order, we always see the first letter of each word. ठीक है? हम सबसे पहले हर एक लेटर का फर्स्ट वर्ड देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. Let us do one more example and then you will understand. I hope जितना अभी तक मैंने समझाया आपको समझ में आ रहा है. Next is, अभी थोड़ा सा समझ में आया अल्फाबेटिकल ऑर्डर. Now write. Next is question number 3 is write the names of any 5 animals in alphabetical order. Any 5 animals. Now let us take 5 animals, any 5 animals, okay? So this is tomcat, this is Jerry Mouse. So let us take cat, mouse, lion, dog and fox. It is written, write the names of any 5 animals in alphabetical order. You have to write the names of any 5 animals, okay? I have taken these 5 animals, cat, mouse, lion, dog, fox. So let us take the first first letter of each word, C. Then first letter is M, L, D and F. So we have the letters C, M, L, D, F. Okay. Now arrange these letters in alphabetical order. Which letter will come first? A, B, C. जो भी letters जो भी दिए हुए हैं, it is not necessary that they should start from A only. जरूरी नहीं है कि वो A से ही start होना चाहिए. जो भी alphabets है, उनमें फर्स्ट जो अल्फाबेट आएगा, फर्स्ट जो लेटर आएगा, वॉट एवर द लेटर्स आर गिवन, उसमें जो लेटर सबसे पहले आएगा. सो हियर सी विल कम फर्स्ट. सो सी, देन आफ्टर सी कम्स डी, देन आफ्टर डी कम्स एफ, देन आफ्टर डी, एफ के बाद क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ G H I J K L M. Then comes L and then comes M. Now let us complete the words. C is cat, D is dog, F is fox, L is lion and M is mouse. Okay? So this is how we arrange the words in alphabetical order. I hope ये सबको समझ में आ रहा है बेटा. If you have any doubt, you can ask me in the online class next day. Okay? Now next question is, write the names of any 5 birds in alphabetical order. ठीक है? Any 5 birds. Question 4 is write the names of any 5 birds in alphabetical order. So let us take any 5 birds. Let us take dove, parrot, owl, eagle, sparrow. Okay? You can take any names of any 5 birds. Write the names of any 5 birds in alphabetical order. So that means first you have to take any 5 birds and then arrange these birds in alphabetical order. So what do? We first take the first letter of each word. This is D, then P, then first letter O, then first letter is E and first letter is S.
Now let us arrange these letters in alphabetical order. So which letter will come first? A, B, C, D. D will come first. D. Then A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. O. Then P, Q, R, then S. Okay. So these are the letters in alphabetical order. Now let us complete the words. D is for D-O-V-E, dove. E is E-A-G-L-E, eagle. Then O is O-W-L, owl. Then P is parrot. And S is sparrow. Okay. So when you arrange the birds in alphabetical order, you get dove, eagle, owl, parrot, sparrow. Okay. So whenever we have to arrange the words in alphabetical order, we always see the first letter of each word. हम हर एक वर्ड का सबसे पहले क्या देखते हैं? फर्स्ट लेटर. ठीक है. पहले हम जो फर्स्ट लेटर्स है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. उससे क्या होता है? इट बिकम्स इजियर फॉर अस. ठीक है. पहले हमने सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को हमने प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया. फिर हमें पता चल गया कि कौन सा वर्ड पहले आएगा एंड देन वी राइट द वर्ड्स. ओके. आई होप चिल्ड्रेन दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सबको समझ में आ रहा है? I will again repeat. If you have any doubt, you can ask me in the online class tomorrow. Okay? Now this is just an interesting activity. Find out a secret message by writing the first letter of each picture's name in the given box. You can see some pictures in your book. This is page number 7. I hope everyone has got the book. In this, you can see some pictures. Okay? And boxes are made. Boxes are there. Okay. 1, 2, 3, 4, and then 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now what you have to do here is you have to write the first letter of each picture's name. The pictures which you can see here, जो यहाँ पे आप pictures देख रहे हो, उसमें हर एक picture का जो नाम है उसका आपको first letter हर एक box में लिखना है. So after doing it, you will get a message. Now let us see what is the message. First picture is of an owl. ये सबको समझ में आ रहा है? This is owl. So the first letter of owl is O. We will write O here. ठीक है? The next picture is bat. ठीक है? Next picture क्या है? Bat है. So we will write the first letter of the word bat, which is B. O, B. Then third picture is of an egg. The first letter of egg is E. So we write here E. Then this is an animal called yak. Okay. This yak is not found everywhere. ये yak जो है आपको हर जगह नहीं मिलेगा. This is found in लेह लद्दाख साइड, जैसे तिब्बत वगैरह साइड में, जम्मू कश्मीर में जो है उस साइड में ये एनिमल मिलता है. एंड पीपल यूज इट्स मिल्क. इसका जो मिल्क होता है, याक का मिल्क होता है, वो वहां पे लोग यूज करते हैं. सो द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द स्पेलिंग ऑफ याक इज YAK. याक. ओके. सो द फर्स्ट अल्फाबेट इज Y. वी राइट हियर Y. नाउ नेक्स्ट इज, फर्स्ट इज yacht. The spelling is YACHT. First alphabet is yacht. ये जैसे लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, वाटर स्पोर्ट्स में जाते हैं,
तो ये यूज करते हैं. ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट अल्फाबेट इज Y. देन दिस इज व्हाट? दिस इज एन ऑक्स. ठीक है. Y-O. Then this is an umbrella. Umbrella, the first letter of umbrella is U. So we write here U. Y-O-U. This is the picture of a rose. And the first letter is R. So the word is your. Now let us see the last word. This is elephant. So the first letter is E. This is lion. So the first letter is L. Then third picture is dog. So first letter is D. Then eagle. First letter is E. Then next is rat. First letter is R. And last picture is of a ship. So first letter is ship. So what is the message which you have got? The message is obey your elders. मतलब अपने बड़ों की बात मानो. ओबे मतलब बात मानना. योर आपके एल्डर्स मतलब बड़े. ओबे योर एल्डर्स मीन्स अपने बड़ों की बात मानो. सो चिल्ड्रन, आई होप दिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज क्लियर टू यू ऑल. इफ देयर इज एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग विच यू हैव नॉट अंडरस्टूड और विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ऐसी कोई भी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है या समझ में नहीं आ रही है, you can ask me in the online class tomorrow. We will discuss this chapter and then you can clear your doubt. So thank you children. Thank you for attending my class. Thank you so much.